we are studying behavior of cost in long run. Long run means what? This period which is less than 1 year. That time how cost behaves. What is the behavior of total cost, fixed cost, and variable cost that we had seen with the help of this chart. Let's look at this chart. My total cost, if I change the level of activity, if I change my production level, at that time fixed cost is not changing. But if I look toward the variable cost keeps on changing. In fact, variable cost is increasing because this is the cost of raw material. तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होने से उसका क्या होता है, जितना मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा उतना ज्यादा मुझे रॉ मटेरियल लगने वाला। तो क्या हो जाएगा, if we change your level of activity, that time fixed cost will remain throughout the production same, but variable cost will vary. So total cost becomes total cost is equal to fixed cost plus variable cost. लेकिन उसमें से fixed cost तो फिक्स है, लेकिन variable cost change होने से मेरा total cost change हो जाएगा. So accordingly, with respect to your increase in volume of output, your total cost is increasing, and that is in column number 4. Then we have calculated average of fixed cost, average of variable cost, and average of total cost. सबका मैंने क्या किया है, average किया है. So while calculating the average, what I have done, so average cost I have calculated by average fixed cost divided by output, then average variable cost divided by output, and average total cost divided by output. Looking towards the average fixed cost is decreasing by increasing the production. तो जितने भी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उससे क्या हो जाएगा, मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम होती जाएगी. लेकिन व्हाट इज अबाउट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज शोइंग हाईएस्ट, then if we increase my production level, at that time average variable cost decreases, and it grows to up to the fourth unit my average cost is decreases, and after fourth unit, and if I produce fifth unit, at that time your average variable cost increases. It becomes from 80 to 84, 92, and 104. Means what? Up to 4 units my average variable cost decreases, and if I produce next unit, that is fifth unit, at that time my average variable cost increases. So as an organization, as a firm, I have to produce up to 4 unit. उसके बाद क्या हो रहा है, मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है. अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या है? जस्ट लुक एट द एवरेज टोटल कॉस्ट. तो देखिए, जैसे देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होके जाएगी, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? टू सर्टेन एक्सटेंट, टू सर्टेन यूनिट्स इट विल डिक्रीज. एक यूनिट के जगह पे पहुंचने के बाद वो क्या हो जाएगा? जस्ट लुक एट 1 मिनट, आई विल शो यू हियर. देखिए, अप टू 80 यूनिट्स क्या है? डिक्रीज होती है, और उसके बाद इंक्रीजिंग ट्रेंड चालू होता है. जस्ट लुक एट दिस, एंड यहाँ पे देखिए ये टोटली डिक्रीज होके जा रहे हैं. ये कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, और ये कॉस्ट क्या है? अप टू यहाँ पे डिक्रीज होती है, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज होने स्टार्ट किया है. गेटिंग दिस? तो टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट निकालते हैं, तो ये दोनों का एडिशन है, ये दोनों का एडिशन इधर आता है. इसमें क्या होता है? वन कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, अदर कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई टोटल कॉस्ट इज आल्सो डिक्रीजिंग टू सर्टेन एक्सटेंट. तो टोटल कॉस्ट भी क्या हो रहा है? हमारा टोटल एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है. बट उसके बाद व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? बिकॉज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एंड योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट डिक्रीजिंग बाय दैट मच. जितने प्रोपोर्शन से मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होता है, उतने ही प्रोपोर्शन से मेरा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है. दैट्स व्हाई व्हाट इज हैपनिंग. तो मेरा टोटल कॉस्ट अप टू सिक्स्थ यूनिट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है मेरा टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट. एंड मेरा वेरिएबल कॉस्ट कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है? फोर्थ यूनिट तक ही डिक्रीज हो रहा है. गेटिंग दिस?
as well as my marginal cost. Look at my marginal cost. Marginal cost कब तक decrease हो रहा है? इधर तक ही decrease of the up to 4th unit. That's why firm has to decide the level of activity. अगर ऐसा situation रहेगा तो firm ने कितना production करना चाहिए? That I have to decide. Okay. So again, it depends upon the organization's objectives. But definitely, what will happen if you produce more? If you produce more, that time what is happening? Your variable cost is decreasing. But though your variable cost increases, look at this too. Though your variable cost increases, but your total cost is decreasing up to this unit. आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, आपका फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होगा, लेकिन टोटल कॉस्ट भी डिक्रीज हो रहा है. जब तक मेरा टोटल कॉस्ट डिक्रीज होगा तब तक मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ, तब तक मैं इतना मेरा प्रोडक्शन लेवल रहेगा. नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी 6. गॉट इट? So as an organization, how many units I have to produce? I have to produce 6 units where total average cost is lower side. And if I produce 7th unit, at that time total average cost is increasing. That's why I should have to stop this production activity. Getting this? So this is the behavior of cost output with respect to short run. Did you understand? Tell me fast. Yes, sir. Okay. So no need to have more explanation, na? No, sir. Okay. Now, तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है? Here I have shown the graph. ये भी हम लोगों ने कल ही डिस्कशन किया है. Already we have discussed about this graph. Because the way in which your fixed cost will be remain fixed, but with respect to your level of activity, variable cost is increasing. And the way in which your variable cost is increasing, in the same manner your total cost is increasing. The gap between total cost and total variable cost is remain same because there is no addition of fixed cost in the total output. टोटल कॉस्ट, टोटल आउटपुट में फिक्स कॉस्ट बार बार चेंज नहीं होने वाले हैं. इसलिए क्या है, दोनों में जो गैप है किसमें, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल में एज इट इज रहता है. दैट इज द एक्सप्लेनेशन. ओके, सो दिस वाज द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन शॉर्ट टर्म. अभी शॉर्ट टर्म यानी हम लोग वी विल टेक अकाउंट ऑफ ओनली 1 ईयर और अप टू 1 ईयर. The cost output relation, what is the behavior of the cost, what is the trend of cost with respect to output in long run. Long run में cost का और output का क्या relationship, that we have to study. अभी long run consider करते हैं means what, this may be a period of 5 years, 10 years, 20 years. तब तक I will be not continue with the same machinery. शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने क्या किया कि फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन एज. तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा है, मेरा मशीनरी का कॉस्ट. मशीनरी आई एम नॉट गोइंग टू चेंज विद इन 1 ईयर. लैंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज. प्लांट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज. उसके बाद मेरे जो कोई फिक्स कॉस्ट होते हैं, रेंट, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, इसलिए वो फिक्स थे. अभी लॉन्ग रन में क्या है, देयर इज नथिंग इज फिक्स्ड, नथिंग इज फिक्स्ड. प्लांट कैन आल्सो आई चेंज आफ्टर 5 years. Machinery I have to change after 5 years. Means there is nothing is fixed in long run. अगर 20 साल का मेरा प्लान है तो 20 साल में मेरा प्लान भी बदल जाएगा, मशीनरी भी बदल जाएगी, एवरीथिंग विल बी चेंज. So that during this time, during this long run, fix is nothing. अगर फिक्स नहीं है, कोई भी फिक्स नहीं है, तो एंड दैट टाइम व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट एंड आउटपुट. आउटपुट चेंज करने से कॉस्ट में क्या इफेक्ट होता है, ये हम लोगों को देखना है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, नथिंग इज फिक्स बिकॉज मशीनरी विल बी चेंज, प्लांट विल बी चेंज, योर प्रोडक्शन system will also change, so that there is fixed cost is not available. So all the costs are variable cost in case of long run. Okay, so see, the long run is the period during which all inputs are variable including one which are fixes in the short run. जो शॉर्ट रन में जो कुछ फिक्स एक्सपेंसेस थे, फिक्स कॉस्ट थे, ये कुछ भी नहीं है, सारे वेरिएबल है. इन लॉन्ग रन द फर्म कैन चेंज आउटपुट अकॉर्डिंग टू द डे.
तो डिमांड कुछ भी यानी हमारे फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं है, इसलिए डिमांड देख के आपको क्या करना है, आपको बिकॉज टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट योर fixed cost plus variable cost, but fixed cost is also changing, variable cost is also changing, that's why total cost will also change, increase. Getting this? Now in case of long run, fixed cost is not there, you have all variable cost, you have all variable cost means what, machinery का cost भी variable है, प्लांट की कॉस्ट भी वेरिएबल है, मशीनरी की कॉस्ट, प्लांट की कॉस्ट, लैंड और जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस रहेंगे, इंश्योरेंस रहेगा, ये सब कुछ वेरिएबल ही है। इसलिए आपका कॉस्ट आउटपुट रिलेशन क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर डिमांड। सो इन लॉन्ग रन a firm can change its output according to its demand. डिमांड देख के फर्म आउटपुट चेंज करेंगे। Over a long run period, the size of plant can also change. Capacity of plant can also change in the long term. So you can't expect it in fixed cost. Then unwanted building can be also sold off. Staff can be increased or decreased. ये सारी चीजें जो फिक्स होते हैं वो फिक्स कुछ भी नहीं होता है, हम लोग चेंज कर सकते हैं in long run. And we have to change it. Then the long run enables the firm to expand the scale of its operation by purchasing in larger quantities of all these. तो लॉन्ग रन कॉस्ट में क्या होता है, लॉन्ग रन कॉस्ट enables firm to expand the scale of operation, यानी प्रोडक्शन इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए फोर्स करती है लॉन्ग रन में। कैसे? by purchasing in larger quantities, because see, suppose that I am going to purchase one unit, that time some of the units I am not purchasing for short term purpose, because suppose I have purchased one unit, at that time I will continue with this product for 5 years, तो 5 साल का ऑर्डर में एक बार दे दूंगा। Getting this? So we will be purchasing in more number of units, because you will be continue with the same production, same unit, same machinery, same for example plants for so many years. तो यू विल परचेस इन बल्क, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर लॉन्ग रन में मुझे कुछ दिन तक अगर कोई प्रोडक्ट यूज करना है तो मैं बल्क में प्रोड्यूस करूंगा, नॉट इन शॉर्ट। ठीक है, तो हम लोग इनपुट जो लगते हैं कंपनी के लिए, जो वेरिएबल्स लगते हैं, जो कुछ इनपुट लगते हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, लार्ज क्वांटिटी में बाय करेंगे। अगर लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमको कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल मिल जाएगा। Because if you purchase one unit, at that time cost will be different, but if you purchasing from the same seller in 100 units or in 1000 unit, at that time cost may decrease. Okay, so that is there. तो अगर हम लोग लॉन्ग रन में कुछ सोचते हैं तो डिमांड का एस्टिमेशन करते हैं, आउटपुट का एस्टिमेशन करते हैं, एट दैट टाइम वी हैव टू परचेज इन बल्क। thus in long run all factors will become variable, सारे factors variable होते हैं। The long run cost output relation therefore imply the relationship between total cost and total output. Same है, total cost and total output का relation देखना है, लेकिन फिक्स कुछ भी नहीं है, all are the variables. In long run cost output relation is influenced by the law of returns to the scale. तो कितना प्रोडक्शन कितना करना है, so law of return to the scale यानी फिर एक बार प्रोडक्शन बढ़ा के and at particular maturity level I have to increase and peak level होने के बाद वो क्या आ जाएगा, रिटर्न टू द स्केल, वापस आएगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। यानी इफ यू चेंज योर आउटपुट with respect to your production, with respect to your price, at that time what will happen, you can increase your output, at that time price is also going to increase and उसके बाद वो नीचे आ जाएगा। So you have to find that point, that is called as the returns to the scale. So in long run firm has number of alternatives in regards to the scale of operation. Scale of operation means what, your expansion, how many units you are producing, that is the scale of operation. It may be 2 units, 3 units, 5 units, 6 units, 10 units. So each scale of production or plant size, the firm has appropriate short run average cost. तो हर एक प्लांट कैपेसिटी मुझे डिसाइड करनी पड़ेगी फॉर सर्टेन पीरियड, मींस व्हाट, आई विल प्रोड्यूस दिस यूनिट्स फॉर नेक्स्ट 5 months, उसके बाद अनदर 5 months आई हैव न्यू प्रोडक्ट, नया मॉडल हम लोग बनाएंगे, नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, फॉर यू हैव ब्रेकडाउन, यू हैव टू मेक ब्रेकडाउन ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट इनटू शॉर्ट रन कॉस्ट। तो
पूरा मेरा प्लान 5 साल का है, लेकिन 5 साल का भी फिर क्या है, मेरा सेगमेंटेशन 5 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज शॉर्ट रन कॉस्ट। तो हम लोग शॉर्ट रन, हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट में डिवाइड करते हैं लॉन्ग रन। ओके, so for each scale of production, that is the plant size, the firm has an appropriate short run average cost. So I have to find out the short run average cost. Short run average cost means what? This is the cost which is for short run period, is or less than 1 year, that I have to identify. क्योंकि क्या है, if I go to purchase the raw material at that time, cost of raw material will be fixed for 6 months. उसके बाद क्या हो जाएगा, ड्यू टू द फ्लक्चुएशंस इनटू द मार्केट, सप्लायर कैन इंक्रीज द प्राइस ना। समझ में आ रहा है? अगर आज मैं फॉर एग्जांपल मोबाइल परचेस करूंगा, दैट टाइम फॉर एग्जांपल मेरा सैमसंग का मोबाइल की कीमत है फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज। ये 5,000 रुपीज 5 साल तक उतनी ही रहेगी क्या? नहीं है ना। गेटिंग दिस, एज पर द इनपुट, एज पर द मार्केट डिमांड, माय सप्लायर कैन चेंज द प्राइस। तो आज जिस मोबाइल फोन की कीमत 5,000 रुपए है, वो आफ्टर 6 मंथ्स इट विल बी 6,000 रुपीज, और इट मे बी लेस देन 6,000 रुपीज, और इट मे बी लेस देन 5,000 रुपीज, इट हैपेंस इन द मार्केट। तो उसको बोलते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। So I need to understand the what is the performance of short run average cost. The short run average cost curve applies only one plant, whereas the long run average cost curve takes into consideration many plants. So long run में we have to consider many plants, and short run में we have to consider only one plant. Just look at the diagram. पहले diagram देखो, उसके बाद मैं explain करूँ। LAC stands for long run average cost. SAC1, SAC2, SAC2, SAC3, these are the short run. So what I have to do as a manufacturer, I have to consider the long run average cost and short run average cost within the long run average cost. I will make the plan of 10 years. Lekin while making the plan of 10 years as a long run average cost, I need to understand the behavior of short run average cost. 6 महीने का, 5 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का भी मुझे short run average cost decide करना पड़ेगा, identify करना पड़ेगा, because it also affect on my production activity, and accordingly my cost and output is going to be changed. Just look towards the diagram, then we will discuss regarding to this diagram. Okay, should we discuss now? Should we discuss about this cost output in long run now? Yes, sir. Now look at the diagram. On y-axis I have taken cost, and on x-axis I have taken output. Output means it is your production level. Okay, and जो LAC जो दिखता है ना, this is the curve that is called as a long run average cost. एक है, और उसके बाद within this I have shown SAC1, that is the short run average cost of first plant, short run average cost of second plant, and short run average cost of third plant. Getting this? So within this, I have shown three short run average cost of these various plant capacity.
Now to draw LAC curve, we have to start with the number of SACs. यानी जो एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो एट दैट टाइम we will draw this long run or average cost on the basis of short run average cost. Getting this? Now short run average cost is the cost which is specified to certain period. It may be 3 months, 4 months, 5 months or less than 1. तो हर एक ईयर के हिसाब से एक एक मैंने ग्राफ यहाँ पे निकाला है. तो if I draw the short run average cost for 1 year, next year, next to next year, or with respect to your production capacity, at that time this long run average cost is the tangent to the short run average cost. हर cost को fixed cost is there, so fixed cost के ऊपर क्या हो जाएगा, मेरा short run cost रहेगी SSC1, गैप है, SSC2 टच होती है SSC3 और ऊपर जाए. तो मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इन बिटवीन फर्स्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. See, my long run average cost is there. After that, it starts decreasing. Okay. So whenever it decreases, at that time at SSC1, here they intersect, they touches with each other. After that, again it starts decreasing and it touches to the fixed cost. उसके बाद at fixed cost again second SSC are touching with each other. After that, after crossing this level of activity Q2, number of units अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, again it will start increasing. कितना इंक्रीज होगा, यहाँ तक. यहाँ पे फिर एक बार at this level of output that is R, again यहाँ पे वो टच करेगी SSC3 को. उसके बाद it will start increase. After that this will increase up to this LAC level. This is called as a long run. So this is the SSC1 is the cost behavior of small scale firm. If this is the cost behavior of medium scale firm and this is the cost behavior of large scale firm. So on the basis of your level of activity, you will decide on the basis of your level of activity कितना production करना है. Accordingly, I will expand my capacity, whether I should go for long term, small scale industry, medium scale industry or large scale industry. So above figure it is assumed that technology they are 3 size plants. मेरे पास 3 size plant है, that is small, medium and large. SAC1 for the small size, SAC2 is for medium size plant and SAC3 is for large size plant. We have considered 3 size plant. If the firm wants to produce OP units, OP कहाँ पे है, यहाँ पे है OP. If firm wants to produce OP units, it may be 4 or 10 okay units of output, it will choose smallest plant. अगर उनको OP इतना ही production करना है, that time they can go for small size plant. Getting this? So during the small size plant, that this is the behavior of SAC. It will decrease to certain extent and again it will start increase. तो कितना प्रोडक्शन करना है, OP जहां से मेरा इंक्रीज होना चालू होगा वहां पे मुझे प्रोडक्शन बंद करना. Now for output beyond OQ से अगर हम लोग ज्यादा जाते हैं, for the output beyond OQ, the firm will optimum for medium size plant. अगर आउटपुट OP से ज्यादा करना है तो क्या हो जाएगा, OP से अगर मेरा OQ तक मेरा प्रोडक्शन लेवल रहेगा तो आई शुड हैव टू गो फॉर दिस मीडियम साइज प्लांट. ऑटोमेटिकली साइज जब चेंज होती है तो रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी सब कुछ मुझे चेंज करना पड़ेगा. So accordingly my cost can also comes. So for output beyond OQ, the firm will optimum for medium size plant. So this will be beneficial to organization to have a medium size plant, because on that basis you have to arrange your fixed costs. उसके हिसाब से आपके प्लांट के हिसाब से, whether it may be small size, medium size or large size, you have to arrange your the plant capacity ना. Plant capacity उसके हिसाब से मेरा
फिक्स कॉस्ट भी अरेंज करनी है एंड यू हैव टू परचेस इन बल्क टू दैट एक्सटेंट. इट डज नॉट मीन दैट ओक्यू प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन स्मॉल स्केल. ओक्यू इतना प्रोडक्शन स्मॉल स्केल में पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है. लेकिन क्या होता है, अकॉर्ड ऑटोमेटिकली योर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बिकॉज योर प्लान इज अकॉर्डिंगली दिस ना. Now, rather it implies to the cost of production, it will be more. It will be more. 1 minute. Rather, it implies that cost of production will be more with a small plant as compared to medium. अगर हम लोग इतना OQ इतना प्रोडक्शन स्मॉल स्केल में बनाते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनाते हैं, तो इट्स कॉस्ट विल बी हायर बिकॉज फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज. क्योंकि पहले अगर मैंने 10 का ऑर्डर दिया तो मुझे क्वांटिटी का रेट लगा है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज. अगर मैं 20 का ऑर्डर देता तो 50 करता है मेरा इन्वेंटर वेंडर वाला, तो 50 यानी कॉस्ट रिडक्शन होगा. अगर मैं बार बार ऑर्डर दे दूंगा तो मेरा कॉस्टिंग बढ़ जाएगा. अगर मीडियम साइज अगर मैंने सोच लिया तो आई विल ऑर्डर इन द बल्क, दैट टाइम वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो डिक्रीज. अगर बल्क में प्रोडक्शन किया तो पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती है. अगर एक एक प्रोडक्शन किया तो उसका कॉस्ट ज्यादा होती है. दैट्स व्हाई इट हैपेंस. तो हम लोग OQ नंबर ऑफ यूनिट्स स्मॉल स्केल में भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्शन विल इंक्रीज एंड दिस विल बी नॉट अफोर्डेबल टू मी. तो ये मुझे बेनिफिशियल नहीं रहेगा. दैट्स व्हाई एज पर द लेवल ऑफ एक्टिविटी आई नीड टू चेंज माय लेवल. ओके, नाउ सी हियर फॉर द आउटपुट ऑफ OR यानी आगे वाला पॉइंट. Yes, OR means up to this point. For the output of OR, the firm will choose the largest plant size as the cost of production will more with medium plant. अगर large production करना है तो I have to give the orders, I have to purchase the land, I have to purchase fixed asset more times, whose lifetime is more, as well as whenever I will purchase the raw material at that time I have to purchase the raw material for 5 years. एक बार ही ऑर्डर बल्क में हम लोग ऑर्डर दे देंगे so that cost will be less. अगर स्मॉल स्केल में मैंने कितना दिया था, मीडियम साइज में मुझे क्वांटिटी लगता था फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स, लेकिन लार्ज स्केल में अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो आई हैव टू इंक्रीज अप टू 500 यूनिट्स. तो 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कॉस्ट और 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन कॉस्ट उसमें फर्क रहेगा. जितना कम प्रोड्यूस करोगे उतना उसका कॉस्टिंग ज्यादा रहेगा. अगर जितना ज्यादा प्रोडक्शन किया तो क्या हो जाएगा, मेरा कॉस्टिंग कम आता है. इसलिए व्हाट आई वुड डू, if I want to expand my production activity in larger point or larger extent, at that time I have to go for larger. तो उसमें होता है क्या, देखिए, thus the firm has a series of SAC curve. इसलिए लॉन्ग रन के हिसाब से फर्म के पास वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कर्व मिलते हैं, लॉन्ग रन में वेरियस मिलते हैं. एंड द LAC कर्व फ्रॉम विल टेंजेंशियल टू द एंटायर फैमिली ऑफ SAC. तो देखिए यहाँ पे LAC क्या हो रहा है, टेंजेंशियल जा रहा है. यहाँ पे इसको SSC 1 को टच हो रहा है, यहाँ पे SSC 2 को टच हो रहा है, यहाँ पे SSC T3 को टच होके आगे बढ़ते जा रहा है. पहले डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज डिक्रीजिंग एंड आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी increased. Now that is LAC curve touches to each SSC curve. हर एक शॉर्ट टर्म एवरेज कर्व को लॉन्ग टर्म एवरेज कर्व टच होता है at one point and thus it is known as envelope curve. इसलिए उसको क्या बोलते हैं, envelope curve बोलते हैं. And it is also known as a planning curve as it serves as a guide to the entrepreneurs in helping planning to expand the production. So it helps, LAC curve helps to the entrepreneurs or businessmen to decide the level of activity, because how SSC are changing and how LAC are also changing. So with respect to proper understanding of short-term average curves and long-run average curves, I will decide my production level. Getting this? With the help of this long-run average curve, firm determines the size of plant.
So whether I should produce in long run, medium term or short term, मेरा प्लान का कैपेसिटी मीडियम रखना है, स्मॉल रखना है या लॉन्ग रन रखना है, दैट आई शुड डिसाइड on the basis of long run average curves, which is the lowest average cost of producing given volume of output that it anticipates. यानी अगर हम लोग लॉन्ग रन में सोचते हैं तो लॉन्ग रन में मुझे कॉस्ट कम ही आने वाली, but with respect to this long run I have to decide my level of activity, कितना प्रोडक्शन करना है, 100 करना है, 200 करना है, 500 करना है, because see here, if you produce more in long run as well, that time for at R your long run curve is also increasing, total cost is also increasing. So during the long run also I have to understand the behavior of short term average cost 1 2 3, and accordingly I have to decide my output level. Okay, so this was something about cost output behavior in long run. Understand this? I hope you are understanding this. In case any doubt, just ask me doubt, otherwise we will move to the next unit, fourth unit. We have finished 3 units. बोलो, कुछ डाउट है? We have studied the cost output relationship between short run and cost output relationship between long run. Do you have any doubt with respect to this two cost output relationship? If it is no, then we will start with fourth unit. No. If you have any doubt with respect to any of the article, you need more explanation, you can just discuss. Otherwise, we will go to the next slide, next unit. बोलो जल्दी. I think nobody is replying. Means what? I assume that you are not having any kind of doubt. So let us start with next unit. That is the fourth unit, which is one of the bigger unit. Okay. I hope you are understanding. In case of any of the doubt with respect to previous 3 chapters, you can ask me, you can message me, you can call me. Okay. Now, because economics is something technical, because everybody is not having this finance or economic background. Some people may be from engineering background, some people may be from arts background for this MBA. Some people may be from pharmacy background, some people may be from other background, science background. Okay. That's why they may have little bit problems with respect to understanding these concepts. Those people who are not having from the same background, they can ask me questions. Okay. Now let us go with next unit, that is revenue analysis and pricing policies. Revenue yani, this is your income. Revenue is nothing but your income. And with respect to your revenue analysis, how can you decide your pricing policies? So this is one of the biggest topic, biggest chapter. So here we have to understand the meaning of revenue, types of revenue, relationship between revenue and price elasticity of demand, pricing policy, objectives of pricing policy, cost plus pricing policy, marginal cycling marginal cost, cycling pricing, penetration prices. So we have to study the pricing policy with respect to revenue analysis. Let us go one by one. Okay. First, let us understand what is meant by revenue. Okay. रेवेन्यू क्या होता है? इट इज द मनी जनरेटेड फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन. जो पैसा इनकम जनरेट करते हैं बिजनेस ऑपरेशन से, कुछ एक्टिविटी करके, कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके, कुछ सर्विसेज सेल करके, कुछ सर्विस देके जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो इनकम जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू. So revenue is the money, or that is the income generated from normal business operation, day-to-day business operations, calculated average sale price times to the number of units sold. How you are going to calculate this revenue? Revenue is equal to selling price per unit multiplied by number of units to be sold. So 100 is the selling price,
and number of units are 10. So 10 into 100 is equal to 1000 will be your revenue. Getting this? So it is the gross income. Revenue means what? It is the gross income from which costs are subtracted to determine the net income. ये आपका टोटल सेल की अमाउंट है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे? This is the gross value of your sale. From this gross value, I will subtract my expenses. So 400 is my gross sale. From this 400, I will subtract 1000, well, sorry, 100 as a cost. So 400 minus 100 is equal to 300 will be your net income, net revenue. Getting this? So what is the difference between gross revenue and net revenue? Gross revenue means what? It is the amount of your sale. From that, I have not subtracted expenses. Now, net income or net revenue means what? This is the amount from my gross sales I have subtracted expenses. Okay. So revenue is also known as a sale और on the income statement. तो income statement अगर हम लोग बनाएंगे तो उसमें revenue को sale ही बोलते हैं. Revenue is the money brought into company by its business activity. Business activity करने से जो कुछ पैसा जनरेट होता है, मनी जनरेट होता है, उसको रेवेन्यू बोलते हैं. A company's revenue includes, तो कंपनी का रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? With the help of sale of goods and services. गुड्स या सर्विसेज बेचने से जो पैसा आता है, that is revenue. Then interest, if company is generating interest, banks, let us take an example of banks. Banks will provide the loan to the customers, and whatever income generated in the form of interest, that will be also revenue to the firm. Then dividends, for example, one company is purchasing shares of other company. At that time, that company also gets this certain amount of dividend. That is also source of revenue. And rental income. Suppose one company is having a factory which has rented to other company. So that company is getting the rent. That rent is also called as a revenue. So what are the sources of revenue? Either the company can get the revenue through the sale of goods and services, interest earned, dividend earned, and rental income. These are the various sources of revenue to the organization. Now, now evaluating your company's revenue can help you to determine how well the business is performing as compared to previous year. इसका मतलब by understanding the status of your revenue, you can analyze the progress of your organization. If you are getting good revenue, means what? Progress of organization is good. If you are getting very less revenue, means what? Profit will be less. Okay, so you can analyze the previous year's performance with respect to revenue. So revenue can also assist your company in recognizing which products and services customer prefer. कौन से प्रोडक्ट से ज्यादा डिमांड आता है, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट में सेल आउट हुआ है, उसके हिसाब से कौन से प्रोडक्ट को डिमांड कितना है, दैट आई कैन एनालाइज विथ रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू. कौन से प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू वी विल कैलकुलेट, एंड द प्रोडक्ट whose revenue is more, that will be sold more into the market. That analysis I can do. On the basis of the revenue from various products, I can understand the preferences of the customer preferences into the market. So this can improve the company's product development process. उसके हिसाब से जो product से मुझे ज़्यादा revenue है, on that product I should have to focus more as compared to other products. दूसरे product के हिसाब से मुझे उसी product के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, because this product is giving me much more profit as compared to much more revenue as compared to other products. Getting this? So the products which are giving me less revenue, I should have to close down this product and I should have to focus on such a product which will give me more revenue. जो product मुझे ज़्यादा profit नहीं दे रहा है, I should pay attention very less as compared to the product which is giving me more profit, because this product will give me more revenue. अभी देखिए types of revenue. There are various types of revenue. First is the operating revenue. Next is the sales revenue, and next one is the service revenue. Revenue will be generated by these activities. If operating revenue means what? It is the income a company earns by conducting its
core business operations. Core business operations means what? Banks. Let us take an example of bank. State Bank of India. Now State Bank of India is taking the deposits, accepting the deposits and taking the loan. This is the core business activity. तो अगर इससे अगर पैसा मिलता है तो that time it is called as a operating revenue. लेकिन along with this lending and depositing, if one State Bank of India is selling insurance policies, selling demat accounts, selling some rest of the other services, at that time it will be not considered as the operating. That will be your sales revenue. Try to understand. Core मेरा business क्या है? Taking the deposits and accepting the deposits and giving the loans. This is my core business. ये core business से जो revenue मिलता है, that is called as a operating revenue. Try to understand. मेरा कोर एरिया क्या है, उससे जितना भी मुझे रेवेन्यू मिलेगा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू. और what are the core activities of your business, and by that activity if you are getting the revenue, at that time it is called as the core or operating revenue. Let us take an example. So it is typically company's largest source of income. मेरा largest source of income मेरा operating revenue है. So selling of insurance, selling of mutual funds, selling of other services, selling of PPF, these will be your supplementary services. So in operating revenue, this revenue from supplementary services will not be counted. Okay. So for example, hospital might earn its operating revenue by providing the medical services. Hospital का industry लिया तो medical services जो provide करते हैं, treatment का जो पैसा आता है, that is something about your operating revenue. Depending upon the business and industry, a company's operating revenue may include various elements. तो आपके business का nature क्या है, industry का nature क्या है, उसके हिसाब से operating revenue increase decrease होता है. So this is about operating revenue. Now sales revenue किसको बोलते हैं? See, sales revenues, it is a sales occur when there is an exchange of goods for currencies. Currency के लिए exchange करते हैं. Sales means what? You are not manufacturing, you are just selling the products. आप production नहीं कर रहे. We have purchased ready-made products and you are just selling it. Means आप खुद manufacturing नहीं कर रहे. We have purchased some products to sell. So that is something about sales revenue. Means what? Sales occurs when there is an exchange of goods for currency. Currency के लिए हम लोग goods exchange कर रहे हैं. For example, fashion company that sells clothing could record the clothing sales as a revenue. This is something about sales revenue. Revenue is different, sales revenue is different. There's service revenue. Service revenue occurs when company or consultant provides professional services to the client. That is, for example, insurance service, then health service, then your service of, for example, movie. This is also one of the service. Okay, so this is the revenue which is generated by providing the services to customer. अगर ये revenue रहेगा तो उसको बोलते हैं service revenue. Okay, then non-operating revenue. Non-operating revenue यानी क्या है? Non-operating revenue is the income of a company earns by conducting business outside its core business activity. Core business छोड़ के जो non-operating revenue यानी core business का revenue. Non-operating means what? If you are along with banking activity, if you are selling insurance policies, if you are opening a demat account, at that time whatever income which is generated through these activities, through demat account, through insurance policies, that will be considered as a non-operating income. Okay, or non-operating revenue. The amount of non-operating revenue, it will be less as compared to operating, क्योंकि मेरा core area है manufacturing का, core area है मेरा, for example, lending of the deposits, accepting of the deposits and lending of the loan. ये छोड़ के मुझ कुछ एक्स्ट्रा काम करता हूँ, that extra work is not nothing but your non-operating revenue. Now rent revenue. Rent revenue means what? Rent revenue is the income a company earns
from following third parties to rent the building or equipment. कुछ बिल्डिंग रेंट पे देने से, कुछ मशीनरी रेंट पे देने से, कुछ प्लांट रेंट देने से जो कुछ मुझे रेंट रेवेन्यू मिलेगा, जो कुछ रेवेन्यू मिलेगा, that will be a part of rent revenue. The next one is the interest revenue. It is an income a company earns on investment. Investment के ऊपर अगर मुझे कुछ पैसा मिलता है, that is something about interest revenue. It is in the form of interest. Interest revenue can also include the interest accrued from accounts receivables. Account receivable के ऊपर अगर मुझे interest जमा होता है, that will be also part of non-operating income. Okay, so we have studied operating income and non-operating income. So next one is the gross revenue. We just look at this slide. Gross क्या होता है, net क्या होता है? We have already discussed about gross revenue. Gross revenue means what? Your gross sales from which your cost has not deducted. Cost subtract नहीं किया हुआ gross revenue. अगर total sale में से cost of production हम लोग जब subtract करते हैं, कमीशन, डिस्काउंट, रिटर्न्स हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमको मिलता है नेट रेवेन्यू. जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड. इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ग्रॉस किसको बोलते हैं, नेट किसको बोलते हैं? So in case of gross revenue, there is no deductions are allowed. Whatever is your total sale value, that will be considered as gross revenue. और ग्रॉस रेवेन्यू से, टोटल सेल वैल्यू से हम लोग एक्सपेंसेस, कमीशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्काउंट अलाउड, देन एनी काइंड ऑफ रिटर्न्स अगर हम लोग माइनस करते हैं तो मुझे मिलता है नेट रेवेन्यू. दैट्स वेरी सिंपल. देन डेफर्ड रेवेन्यू. डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, देखिए. डेफर्ड रेवेन्यू और अनअर्न्ड रेवेन्यू इज द इनकम a company earns before providing the services or goods to the customer. Customer को services provide करने के पहले उसने मुझे पैसा दिया. That is called as a deferred revenue. It is an advance payment to the company receives. मुझे advance payment मिला है for a products or services that it plans to deliver in the future. फ्यूचर में कुछ मेरे कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट का पैसा उन्होंने एडवांस दिया है. That time this is called as a deferred revenue. Is what till that time I have not delivered the goods, but the customer has made my payment in advance. That is deferred revenue. These are the basic economic terminologies, right, to understand. Then accrued revenue. Accrued revenue is the revenue a company earns before delivering the services. Before delivering the services that customer has not paid. Sorry. Accrued revenue is the revenue a company earns for delivering the services and that customer has not paid. मैंने उसको services दी है लेकिन उसने मेरा पैसा नहीं दिया है. But I will consider this as an accrued revenue. It is the revenue that business recognized but has not yet realized. मेरा उतना इनकम है, रिकॉग्नाइज हुआ इनकम है, लेकिन मुझे मिला नहीं. My customer will pay in the future. That is accrued revenue. So this is the difference between deferred revenue and accrued revenue. Deferred revenue यानी पैसा आया है लेकिन माल नहीं गया. Accrued revenue यानी माल मैंने पहुंचाया है लेकिन उन्होंने मेरा पैसा नहीं दिया. कस्टमर ने मुझे मेरा पैसा नहीं दिया. That is accrued revenue. So accrued revenue is significant because it can help accountants understand their company's long-term financial performance. Financial performance study करने के लिए, analyze करने के लिए, we have to consider this accrued revenue because we have recognized that revenue, but still we have not realized. So that will be realized in the future. Future में वो पैसा मेरे पास आने वाला. That is something about your debtors. माल जिनको उधारी पे दे दिया है लेकिन पैसा नहीं आया. That is something about accrued revenue that you can show in your financial statement. And review how sales contribute to the company's profitability. Sales का और कंपनी के profitability का लॉन्ग टर्म में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए accrued revenue कंसीडर करना बहुत important. Then see here the relationship between
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के साथ हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, डिमांड इलास्टिसिटी ये सब कुछ देखा। रेवेन्यू भी, उसके बाद आउटपुट का भी रिलेशनशिप हम लोगों ने अभी तक देखा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, डिमांड फोरकास्टिंग देखा, प्राइस इलास्टिसिटी, उसके बाद हम लोगों ने आउटपुट का भी रिलेशन देखा, अभी रेवेन्यू का भी रिलेशन देखा। सो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड रेवेन्यू। तो प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करने से रेवेन्यू में क्या चेंज होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने आउटपुट में देखा, इन द सेम मैनर रेवेन्यू में क्या रिलेशन, इसका प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और रेवेन्यू, ये तीनों का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, दैट वी हैव टू स्टडी इन रेवेन्यू एनालिसिस। सो total revenue earned from the sales by firm is obtained by multiplying average price per unit multiplied by total quantity। हम लोग रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड इनटू द मार्केट। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 100 and number of products sold into the market 10, that time 10 into 100 is equal to 1000, this will be your total revenue। Look at this diagram. So as my price increases, at that time with respect to elasticity of demand with respect to price, my revenue can also increase or decrease. So it depends upon whether your demand is elastic demand, perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, or unitary demand. On that basis, my revenue with respect to my price, my revenue also increase or decrease। तो हम लोगों को ये देखना है कि प्राइस और इलास्टिसिटी का डिमांड कैसा है, रिलेशन कैसा है, अकॉर्डिंगली हाउ इनकम इज गोइंग टू बी इंक्रीज। जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। ओके, नाउ सी यार, जस्ट लुक एट द ग्राफ। इसी टाइप के ग्राफ हम लोगों ने पहले ही देखे। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ प्राइस एंड डिमांड इलास्टिसिटी। अगर if there is the inelastic relationship between demand and price, यानी प्राइस चेंज करने से डिमांड उतना चेंज नहीं होगा, just see here at that time, for example for P1 level of activity was Q1, इसका मतलब, and if we increase the price up to P2, I have increased the price in more units, more amount, at that time your quantity demanded is not changing with the same proportion। प्राइस 4 रुपए से बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी में थोड़ा सा ही वेरिएशन हो रहा है, बिकॉज दिस द डिमांड प्राइस रिलेशन इज वेरी इनइलास्टिक। इनइलास्टिक यानी प्राइस ऊपर नीचे करने से डिमांड में ज्यादा वेरिएशंस नहीं दिखा रहे हैं सर्टेन प्रोडक्ट। एट दैट टाइम यू हैव स्कोप टू जनरेट द रेवेन्यू। प्राइसेस बढ़ाने से डिमांड नीचे नहीं आ रहा है उतना एक्सटेंट से, जितने एक्सटेंट से मैं प्राइस बढ़ाऊं, तब जाके मेरा रेवेन्यू लेवल हाई रहे, बिकॉज आई कैन कीप इंक्रीजिंग द प्राइसेस and I can keep generating the revenue, because I know that by increasing the prices there is no fluctuations, no that much fluctuations in the demand। प्राइसेस बढ़ाने से उतने क्वांटिटी से मेरा डिमांड कम नहीं होने वाला है, my demand will be remain as it is though I increase the prices। At that time I have good scope to increase the prices and to increase the revenue। okay, उस उल्टा देखिए, इसमें मुझे रेवेन्यू ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा भी प्राइस में फ्लक्चुएशंस किया तो क्वांटिटी में ज्यादा डिफरेंस होगा। सो प्राइस रिडक्शन व्हेन डिमांड इज द प्राइस इलास्टिक लीड्स टू इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू। तो थोड़ा भी प्राइसेस चेंज करने से मुझे डिमांड में बहुत इलास्टिसिटी दिखा रहा है। सो इन दैट केस आई डोंट हैव दैट मच ऑफ स्कोप टू इंक्रीज माय रेवेन्यू। मुझे रेवेन्यू बढ़ाना है तो आई हैव टू इंक्रीज माय लेवल ऑफ यूनिट, प्रोडक्शन बढ़ा के
नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा सोल्ड करके, लेकिन पर यूनिट प्रॉफिट कम रहेगा. आई हैव टू इंक्रीज माय रेवेन्यू. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप. इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड, अगर डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी रहेगा तो मुझे ज्यादा प्राइस बढ़ाने के लिए चांस नहीं है. दैट्स व्हाई I can't increase the price. Automatically what will happen, your demand will decrease in this case. And last one is the unit elastic demand. तो जितने proportion से मैं price change करूंगा, उतने ही proportion से मेरा demand change होगा. So that if we make the increase and decrease in the demand with that respect, my quantity is going to change, my demand is going to change, and accordingly my revenue will also increase or decrease with the same proportion. So it depends. That is the price. This is the price elasticity of demand is equal to 1. हम लोगों ने देखा, if 1 is greater than 1, तो क्या होता है, increase in the price decreases the revenue and decrease in the price increase the revenue. अगर elasticity is greater than 1, अगर elasticity is equal to 1 होगा तो increase in prices और decrease in prices किया तो revenue will not change, it will remain as it is. If you increase the price or decrease the price, a total revenue will remain as it is. If elasticity is less than 1, अगर elasticity 1 से कम है तो क्या हो जाएगा, increase in the price increases 1 minute, increase in the price increases the revenue and decrease in the price decreases the revenue if E is less than 1. Okay, so this is the relationship between price and revenue. Again, the relationship between price and revenue depends upon price and demand and price elasticity. So elasticity less than 1 है, greater than 1 है या equal to 1 है, accordingly my percentage of revenue may change. This is something about relationship between price and revenue. Okay, we have finished our time. Let us stop here. In case of any doubt, you can ask me doubt. Otherwise, we will see you in the next lecture. Okay. So let us stop here. I will share you PPT of third unit. Thank you, sir. Yeah, thank you so much.